Hello everyone, welcome back to our lecture series of Riemann integrations. We have discussed the above integral, Riemann integrations and some important properties of Riemann integrations. इस लेक्चर में हम पीस वाइज मोनोटोनिक फंक्शन, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन और उससे रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे. Then after we will discuss intermediate value theorem for integrals. Okay, so let us start this lecture by writing the definition of piecewise monotonic function. So we are having a definition and this is 33.7 definition. And the first definition is about piecewise monotonic function. Okay, so definition says a function f on closed interval a comma b is piecewise monotonic if there is a partition P that is equals to A equal to T naught less than T1 less than and so on less than Tn is equal to B of, this is the partition, okay, of the closed interval A comma B such that F is monotonic on each interval of this kind of interval open tk minus 1 to tk. okay, so let me show you कि ये किस तरीके के फंक्शंस हमारे पास हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ फंक्शंस डिस्कस करें, जैसे कि सपोज हमने ए से बी इंटरवल लिया और इस तरीके के हम सब पार्टीशन मिला और हर एक पार्टीशन पे हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. Then we are having this and say this. Okay, so suppose this point is B, this point is A, and likewise we are having this point is T1, this point is T2, this point is T3 and so on, this point is Tn minus 1. okay, तो इस सब इंटरवल की अगर हम बात करें टी नोट से T1 तो यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है. अगर हम T1 से T2 में बात करें तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग, इस तरीके से है. तो हर एक सब इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिक होना चाहिए. ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग भी हो सकता है. अगर ऐसा सिनेरियो है कि हर एक सब इंटरवल में एक स्पेसिफिक बिहेवियर है तो हम इस पूरे फंक्शन को इंटरवल ए कोमा बी पर पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे. ओके, लाइकवाइज यू कैन कंसीडर दी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो एज वेल. जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन है, ये एक्स वाई प्लेन और इस तरीके का फंक्शन है. सपोज वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ फंक्शन जिसके अंदर हर एक सब इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है. ठीक है, and these are the points. Suppose this point is A, this point is T1, this point is T2, this point is T3 and so on, this point is B. okay, so these kind of sub intervals we are having कि इस interval में function increasing है, इस फंक्शन में भी, इस सब इंटरवल में भी फंक्शन इंक्रीजिंग है इस तरीके से. और इसी प्रकार आप लोग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में भी सोच सकते हैं. तो ऐसा हो सकता है कि हर एक इंटरवल में, हर एक सब इंटरवल में इंक्रीजिंग हो. ऐसा भी हो सकता है कि हर एक इंटरवल में डिक्रीजिंग भी हो. और ये भी सिनेरियो है कि कुछ सब इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कुछ में ये डिक्रीजिंग है. तो हर एक सिनेरियो में हम फंक्शन f को
इंटरवल a, b पर पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन ही कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शंस। ओके, इसी तरीके से वी कैन टॉक अबाउट द पीसवाइज कंटिन्यूटी, जहां पर हर एक सब इंटरवल में फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो। ओके, सो जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग की बात की, वैसे आप डिक्रीजिंग के लिए भी बात कर सकते हैं। लेट मी टेल कि अगर इस तरीके का है तो ऐसा भी हो सकता है, राइट। हर एक सब इंटरवल में डिक्रीजिंग टाइप का, तो यहाँ पर इंक्रीजिंग टाइप का है, यहाँ पर डिक्रीजिंग टाइप का है, और यहाँ पर डिक्रीजिंग टाइप का भी है और इंक्रीजिंग टाइप का भी है। ओके, तो दोनों तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हैं। हर एक केस में हम फंक्शन f को पीसवाइज मोनोटोनिक फंक्शन ही कहेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, एंड दिस इज अबाउट पीसवाइज continuous फंक्शन। ओके, सो इसकी डेफिनेशन में हम फिर से वैसी पार्टीशन लिखेंगे। सो अ फंक्शन f on closed interval a comma b is piecewise continuous function if there is a partition p of a comma b such that f is uniformly continuous on each interval tk-1 to tk। ओके, तो अगर हर एक सब इंटरवल पर फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है तो फंक्शन को हम इस क्लोज इंटरवल a कोमा b पर पीसवाइज कंटिन्यूस कहेंगे। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में ये प्रूफ किया था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या फिर मोनोटोनिक है तो उस केस में फंक्शन हमेशा इंटीग्रेबल होता है। बट व्हाट इफ फंक्शन इज पीसवाइज मोनोटोनिक और पीसवाइज कॉन्टिन्यूस, क्या उस केस में भी हम फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी को डिस्कस कर सकते हैं? The answer is yes. Again, we will define a theorem which tells us that every piecewise continuous function or every piecewise bounded monotonic function on some closed interval a comma b is always integrable. Okay, अब यहाँ पर जो की नोट हम यूज़ करने वाले हैं वो इस तरीके से है कि जब कभी भी कोई फंक्शन है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास f is uniformly continuous on some open interval a comma b. If we are having this, then f can be extended to a comma b, closed interval a comma b, and f is continuous. ओके, तो हमेशा हर एक ओपन इंटरवल पर डिफाइन हर एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन को हम क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस फंक्शन की फॉर्म में एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड द सेम थिंग फॉर द मोनोटोनिक फंक्शन। अगर मोनोटोनिक फंक्शन इंक्रीजिंग है तब हम इन एंड पॉइंट्स पर फिर से वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास f इज monotonic on open interval a comma b, then अगर फंक्शन then if f is increasing, then हम डिफाइन करेंगे इंक्रीजिंग होगा तो यहाँ पर सबसे कम और यहाँ पर फंक्शन का सुप्रीमम मिलेगा। देन वी कैन डिफाइन दैट
f of a is the infimum of f and f of b that is the सुप्रीमम ऑफ एफ हमने फिर से रीडिफाइन करा ए और बी पर. अब जब ए और बी पर फंक्शन डिफाइंड है और ओपन इंटरवल ए बी पर तो पहले से ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन वी कैन से देन नाउ एफ इज इंक्रीजिंग on close interval a comma b. Okay, and similarly if f is decreasing, then we can define the value of function f at a as the supremum of f and f of b as infimum of f. और इस तरीके से again we are able to define again f is decreasing on close interval a comma b. तो कहने का सेंस क्या है कि जब भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी या फिर मोनोटोनिसिटी किसी ओपन इंटरवल पर गिवन है तो हमेशा हम इसे क्लोज इंटरवल के लिए डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर मोनोटोनिसिटी की बात करें तो अगर फंक्शन ओपन इंटरवल पर डिक्रीजिंग है तो हम इस तरीके से वहाँ पर एफ ऑफ ए की और एफ ऑफ बी की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं. अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के लिए हम इन्फिमम सुप्रीम को डिफाइन कर सकते हैं. कहने का सेंस ये है कि हमने फंक्शन को रीडिफाइन किया है जहाँ पर एंड पॉइंट्स पर वैल्यू फंक्शन के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे. जैसे कि मान लेते हैं फंक्शन हमारा इस तरीके से है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ओके, दिस इज ए, दिस इज बी. तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है इस तरीके से तो यहाँ पर फंक्शन का सुप्रीमम मिलेगा और यहाँ पर इन्फीमम मिलेगा. अगर हम कह रहे हैं फंक्शन डिक्रीजिंग है तो फंक्शन का फॉर्म इस तरीके से होगा और यहाँ पर सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो ए पर हमें सुप्रीमम मिलना चाहिए और बी पर हमें इन्फीमम मिलना चाहिए क्योंकि फंक्शन यहाँ पर डिक्रीजिंग है. राइट, अब अगर ऐसा है तो हम ए और बी पर सुटेबली इन्फीमम और सुप्रीमम डिफाइन करके क्लोज इंटरवल पर फंक्शन की मोनोटोनिसिटी डिस्कस कर सकते हैं. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर द piece continuity and the monotonic function on open interval. Okay, so we are going to use these concepts in the proof of next theorem, and the next theorem says it is theorem 33.8 theorem, and it says if f is a piecewise continuous function or a bounded piecewise monotonic function on close interval a comma b, then f is integrable on close interval a comma b. Okay, so proof is quite simple if you understood these two concepts.